Unacademy. Let's crack it. Pawan Sharma ji, please introduce yourself. My name is Pawan Kumar Sharma. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh, and I did my 10th from Monarch Public School, which is in Uttarakhand, and I did my 12th from Army Public School, which is in Gorakhpur, and then after I did BLLB Honors from Lucknow University, which I passed in 2020, and thereafter I am preparing for judiciary. आपने अपनी स्कूलिंग उत्तराखंड से कंप्लीट की, आप रहने वाले गोरखपुर के हैं, ऐसा क्यों? Sir, my sister was married in Uttarakhand, so nearby her house there was a school. So my father made a choice to send me in that school. So I pursued my 10th from that school. Sir. आपने 3 साल का गैप हो गया आपके ग्रेजुएशन को, आपने एडवोकेसी करी या एलएलएम करने का सोचा? No, sir. Right from the beginning, sir, I was sure that I wanted to join Indian Judicial Service and serve the nation through Indian Judiciary. So I didn't thought about it to pursue LLM or to do advocacy because I was very clear from the beginning that I want to serve the nation through Indian Judiciary. Sir. आपकी हॉबीज क्या हैं? सर, जहाँ पे मैं रहता हूँ बगल में आंगनवाड़ी की क्लासें चलती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो जब भी मैं फ्री होता हूँ तो वहाँ पे जाके उनको पढ़ाता हूँ कभी कभार, और इसके अलावा मैं मूवीज देखना पसंद करता हूँ और कॉमेडी वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करता हूँ. ओके. इंडिया के कोई 3 रिकॉग्नाइज्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स के नाम बताइए. संदीप माहेश्वरी, गौर गोपाल दास, and third one is Sonu Sharma. As आप- far as I know. ठीक है. आप क्रिमिनल लॉस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं या सिविल लॉस? Sir, in criminal law, I'm comfortable. So little bit in civil law also. ओके. आप बताइए, व्हाट इज रिडेम्पशन? So what is redemption? Yes. Sir, redemption means right to redeem the property. Especially, it is given in Section 60 of Transfer of Property, 1382. So when any person mortgages an involved property, and when he pays the principal, when he pays the mortgage money, then he has right to redeem his property. So this is right of redemption. क्या पार्शियल रिडेम्पशन हो सकता है? Sir, generally partial redemption is not allowed because we consider the mortgage property as one unit. But if in any situation, if such property is divided, then such partial redemption can be allowed. जो अक्यूज को पार्डन टेंडर करते हैं, उसके Yes, sir. लिए कौन कौन से एक्ट्स में या कौन कौन से सेक्शंस या इम्प्रिजनमेंट तक के ऑफेंस में पार्डन दे सकते हैं? Sir, it is given under Section 306, where pardon can be tendered, and it can be pardoned by when the trial is by session court, and
Sir, if you are asking about the sections and the punishment in which tender can be pardoned, sir. Sorry, sir, I cannot recall it right now. Okay. जब किसी अक्यूज को पार्डन टेंडर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Sir, approver. अप्रूवर. अप्रूवर और अकम्प्लिस में क्या डिफरेंस होता है? Sir, accomplished is a partner in a crime, and approver is a person to whom an offer has been made that if he is going to that if he is going to tell those circumstances by which offense can be proved against him and also against his companion, then he becomes an approver. And tender of pardon is granted under section 306, but accomplish is given under section 133. So this is the basic difference. What is the evidentiary value of testimony of an accomplice? Sir, an accomplish is an unworthy of credit, and it needs corroboration, sir. As if I talk about section 114 illustration B, so it clearly states that it is unworthy of credit. But section 133 talks about that an accomplice is a competent witness. So its evidentiary value is that its corroboration is required. Because rule of caution, yes, sir. Okay. When search warrants may be issued? Uh, Search warrant can be issued for the public for if any document for the production of any document or for the production of any person if he has been illegally detained, and for the production of document when the court is not aware of the document in whose possession such document is. So in these two cases a search warrant can be issued, and in Are other there cases any other cases? Yes. so in another cases also, like if the document is in the custody of Postal and Telegraph Authority, then in that case, search Who is the competent authority in such cases? search warrant can be issued by the court. Uh, In the case of telegraph or postal authority matters, who is the competent authority to issue sir, warrant? I don't remember, sir. I'm not able to recall it right now. Okay. Can search of any place be conducted without warrant also? Yes, sir. Search of any place can be conducted in special circumstances. What are those circumstances? Uh, like sir, section 100 talks about the search of a closed place where where if it is necessary that if some person is suspected that if he can be hiding there, then search warrant can be issued for the search of such person. What are the questions to be determined by the court executing decree? Uh, as per section 47 of Code of Civil Procedure 1908, some questions can be determined like for the satisfaction of the decree, for the discharge of decree, and for the execution of a decree. So question related to this can be determined. Suppose money has been awarded under a decree. How can the payment of money be made? Sir, it can be execution. In case of execution, when a decree for money will be executed, so it can be recovered, sir, by depositing in the court, or it can be sir, I can remember only this point only that it can be deposited in the court. What do you understand by the term affidavit? Sir, affidavit is a self-declaration of a fact which a person knows, and if he makes such a statement before that authority who who's before that authority who makes affidavit. So this is not this cannot be treated as an evidence because it is only a self-declaration of a fact which a person knows. Suppose if a person furnishes a false evidence before the court, has he committed any offense? Yes, sir, he has committed an offense. In which section? He has committed an offense under section 191 of Indian Penal Code 1860. Read with section 193. Are you sure it's 191 read 193? Or there is a yes, specific sir. provision for the affidavit? Affidavit provision related to this given under Order 19 of Code of Civil Procedure 1998, sir. Suppose if police refuses to register FIR
In cases of Yes, sir. offense against women, has the police officer committed any offense? Yes, sir. He has committed an offense under Section 166A of Indian Penal Code 1860. And suppose if he doesn't write the FIR in normal circumstances, in Yes, cases sir. not relating to women, then also he has committed offense Yes, sir. He has committed an offense under that particular section, sir. in the same section. Yes, sir. Okay. Last question. What is the difference between proper party and necessary party? So necessary party is one against whom relief can be necessary party is one against whom relief can be sought and in whose absence relief can be claimed, but his presence is necessary for the complete disposal of the suit. But proper party is that party in whose absence relief can be made, but whose presence is required for the complete disposal of the suit. So, Give an example of this for proper party. example, sir, in a partition suit, all persons are the necessary party. Without any absence, if any party is absent, then his presence is required for the complete disposal of the suit. But in case of proper suit, for example, so there is a sub tenant. So there is no requirement of his presence, but for complete disposal of the suit, his presence is required. आप ये बताइए कि आपने कहा कि आपकी हॉबी मूवीज देखना है, कोई ऐसी 4 मूवीज बताइए जो लॉ पर बेस्ड है, किसी भी लॉ पर बेस्ड है। मैम अभी एक वेब सीरीज आई थी क्रिमिनल जस्टिस और इसके अलावा जॉली एलएलबी 2 और जहां तक मैं एक मूवी और याद कर पा रहा हूँ जिसमें अमिताभ बच्चन की वो मूवी है, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ मैं। ये 4 मूवीज हैं। तो चलिए ठीक है। आप ये बताइए कोर्जन और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस होता है? मैम पार्डन, आई डिडंट कोर्जन एंड एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस होता है? In extortion, ma'am, Section 383 of Indian Penal Code 1860 is relevant. And in extortion, any person is put in fear of injury. And after putting him in fear of injury, such person is induced in order to deliver a property. Then it is extortion. And coercion is given under Section 13 of Indian Contract Act 1872. And in coercion, any person who gives threatening to commit an act which is in prohibition of Indian Penal Code 1860 and with the intention to enter into a contract. So this is coercion. ये तो आपने मुझे सिर्फ डेफिनेशंस बता दी, आपने डिफरेंसेस कहाँ बताए? In extortion, ma'am, putting him in fear of injury is the gist of this offense. And with inducement, such person is forced to deliver the property. So this is extortion. But in case of coercion, a person is threatening is given by one person to another only to enter into a contract. But in case of extortion, the purpose is not to enter into a contract. So this is the difference, ma'am. चलिए ठीक है। आप ये बताइए कि बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ में क्या डिफरेंस है? Ma'am, burden of proof is given under Section 101 of Indian Evidence Act 1872, and onus of proof is given under Section 102 of Indian Evidence Act 1872. Onus of proof, the nature is of shifting nature, but in burden of proof, it never shifts. So these two differences I can remember. And बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों केसेस में किस पर होता है? Burden of proof lies on that person who wants to prove his case, who wants the court to give the relief in his favor. The burden of proof lies on that person. बेसिकली किस पर होता है? हम सिविल केसेस की बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? एट फर्स्ट। अच्छा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस प्रिंसिपल कौन सी केस में आया था? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हम बता सकते हैं कि कैसे केसेस को हम बोल सकते हैं कि ये रेयर केस है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है? Heinous crime, for example, if any person recently, I don't know the year, but I read an example that one person who cutted his child in 7 pieces and also killed his wife and he ran away. So he was caught. So this case comes under the rarest of the rare case. And also if
some person commits, if gang rape of any woman is committed and if she is क्या आप killed मच्छी सिंह brutally, का केस जानते हैं? इस पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस पर आया था मच्छी सिंह का केस, क्या आप जानते हैं ये केस क्या है? uh, ma'am, I don't remember the fact of that case. I will look into it, sir. चलिए ठीक है, ओके। सेक्शन 309 आईपीसी क्या कहता है? It is related to attempt to commit suicide. कितनी पनिशमेंट है? Sorry, I don't remember the punishment. अच्छा, ठीक है। आप बता दीजिए कि हर्ट के कौन कौन से सेक्शन है आईपीसी में? Ma'am, 319, 321, 323 voluntarily for causing hurt, and also it is given under section 333, which deals with hurt while giving provocation. So these are the sections which I पब्लिक think- सर्वेंट को अगर किसी ने हर्ट कॉज किया है तो हम कौन से सेक्शन में उसे पनिश कर सकते हैं? Oh, I'm sorry, I don't remember this. ठीक है, आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन बता सकते हैं क्या है? Sorry, ma'am, I don't remember. I'll look into it, ma'am. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कौन से सेक्शन पे बेस्ड है? It is given under section 35 of transfer of property 1882. विद सेक्शन 35, ma'am. सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? It is related to impossible attempt, ma'am. क्या पनिशमेंट की स्केल है उस पर? Ma'am, if half of the imprisonment, if any attempt is made and such person remains short of completing the offense, and that for that particular offense, if any punishment is there, then half of the imprisonment will be provided to that person. कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज्ड, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है? Ma'am, it is a weak type of evidence. It requires corroboration, as it was held in the case of Kashmira Singh versus State of UP. So corroboration is required, ma'am. It is a weak type of. ओके, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि प्रूफ और एविडेंस में क्या डिफरेंस होता है? Ma'am, evidence according to section 3, evidence can be oral as well as documentary. Right? And proof is the result of evidence, ma'am. When any evidence is produced in the court, then it is at the discretion of the court that whether he admits the evidence or not. And after evidence is proved, then it becomes the result of proof is the result of evidence. प्रूफ इज द रिजल्ट ऑफ एविडेंस और एविडेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रूफ? Sorry, ma'am, I want to correct my statement. Evidence is the result of proof. अभी श्योर है आप? Again, sorry, ma'am, proof is the result of evidence. This time I'm sure that proof is the result of evidence. चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म करते हैं। हम फीडबैक के लिए बता देते हैं आपको आपके प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स क्या रहे हैं इस इंटरव्यू में। आपको कैसा लगा आपका इंटरव्यू? मैम, जैसे आप लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे, मुझे अच्छा फील हुआ और थोड़ा सा लाइट फील किया, मैं थोड़ा सा फियर कम हुआ मैम। अभी तक हेजिटेशन कर रहा था कि मैम आप लोग के सामने भी कैसा होगा मेरा, और मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अभी हल्का फील कर रहा हूँ। फर्स्ट मोमेंट से जैसे सबने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो थोड़ा फियर हट गया। और ये मेरा पहला मॉक है मैम, कहीं भी मैंने मॉक नहीं दिया था, तो ये मेरा पहला मॉक है ऑनलाइन। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मैंने अच्छा किया, बाकी आप फीडबैक जो दे पाए मैं नोटिस करूंगा उसे। ठीक है सर, आपका स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ मेरे क्वेश्चंस का। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। तो पवन जी, आपका लीगल नॉलेज काफी अच्छा है। अप्रूव और अकम्प्लिस आपने बहुत अच्छा बताया। सर्च वारंट वाला अच्छा था आपका आंसर्स। हॉबीज पे आपके पर्टिकुलर आंसर्स बहुत बढ़िया थे। आपको बस थोड़ा सा जो रखना है ध्यान, वो ये है क्वेश्चंस सुनना है पहले। जैसे मैम ने आपसे कोअर्शन और एक्सटॉर्शन का डिफरेंस पूछा, तो आपने उसका डेफिनेशन बता दिया। हाँ जी, ओके बताइए। सर, है ना, ये आप ध्यान रखें। ओके ओके हाँ, बोलिए बोलिए।
सर वो वॉइस क्लियर नहीं थी और मुझे लगा डिफरेंस से ही क्लियर डेफिनेशन से ही कोएशन और एक्सटॉर्शन क्लियर हो जाएगा, बट आई विल रिमेम्बर कि मुझे थोड़े डिफरेंसेस बताने पड़ेंगे। हाँ, जैसे जो भी क्वेश्चन रहे आप अच्छा, डायरेक्टली उसी। एक आप हाँ आप ये बोल रहे हैं ना कि डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा, वहां पे बोर्ड उनके समझने के लिए नहीं पूछता है, वो इसलिए पूछता है कि आप किस वे में आंसर करेंगे उनके क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है मैम। आप ये मत सोच के जाइएगा कि वहां पे ये क्वेश्चन उनको नहीं आता है इसलिए पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको उस वे में समझाना है कि आपकी क्लैरिटी कितनी है, उनको ये समझना है। तो आप उसको पॉइंट्स में डिवाइड कीजिए डिफरेंसेस को। कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है तो डेफिनेशंस के बेसिस पर आंसर नहीं देना है। यस मैम। नहीं तो मैम जैसे कई कोलिग्स से उनसे बात हुई तो वो लोग कह रहे थे कि वहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आप पॉइंट्स बहुत ज्यादा डिफरेंस बता पाओ। तो अगर एक दो तीन डिफरेंसेस आप बता पाओ तो बता ले जाओ, उससे ज्यादा डिफरेंसेस जैसे बताने की वहां हाँ पे जरूरत क्या नहीं। हाँ, होगा। 2-3 ही बताने होते हैं। अब मेन अगर हम कोअर्जन और एक्सटॉर्शन की बात करें तो आप बिल्कुल बोल सकते थे कि ये कोअर्जन सिविल लाइबिलिटी है, एक्सटॉर्शन क्रिमिनल लाइबिलिटी है। कोअर्जन में ओके उसका इफेक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में उसको एंटर कराना होता है, मैम। एक्सटॉर्शन में उनका इफेक्ट होता है कि उनकी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करवानी है। आप अगर ये 3 भी बोलते थे तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट था। ठीक है मैम। ठीक ठीक है, है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से डिफरेंसेस आप कोशिश कीजिए कि ऐसे आंसर करें। ठीक है मैम। कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि आप नर्वस हो गए कुछ कुछ क्वेश्चंस में, जहां आपको आंसर्स नहीं आ रहे थे वहां आपके फेस पे नर्वसनेस दिख रही थी। तो वो आप कोशिश कर रहे हैं, आप भले ही नर्वस हो रहे हैं पर फेस पे दिखना नहीं चाहिए वो चीज। ओके सर, मैं ध्यान बाकी रखूंगा इसका, मैं कॉन्फिडेंस पॉज लेके कॉन्फिडेंस आंसर काफी करने की अच्छा था। कोशिश। हाँ, पॉज लेके आप आंसर करिए, 1-2 सेकंड का पॉज लीजिए। आप बोर्ड से टाइम लीजिए सोचने का, उसके बाद आप आंसर करिए। ठीक है सर। बाकी बहुत अच्छा था। ऑल द बेस्ट। मैम कंटिन्यू करिए। थैंक थैंक यू सर। टीपीए की प्रोविजन शायद थोड़ा सा आपको मुझे ऐसा लगा कि अभी रिवाइज नहीं किया है। मैम सबसे पहले मैंने उसे ही पढ़ा था तो दिमाग से स्किप कर गया, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन मुझे ध्यान में नहीं चल अभी भी कोई आ पा कोई रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं है कि हर आंसर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं आता आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आपका अपीयरेंस को लेके थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी कि आप क्या यही पहन के जाएंगे? नहीं मैम, मेरा ड्रेसअप नेवी ब्लू ब्लेजर है और पैंट है, अंदर इससे नेवी लाइट ब्लू कलर की शर्ट है, जो एयरफोर्स की ड्रेस होती है। ऊपर आपने अगर देखा होगा तो उसमें लाइट ब्लू की अंदर शर्ट रहेगी और नेवी ब्लू कलर की टाई रहेगी। ये एक फॉर्मल शर्ट थी तो मैंने ऐसे पहन के आपके सामने अपीयर हुआ हुआ। अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपका ठीक है, लीगल नॉलेज काफी अच्छा था। आप उसको प्रॉपरली स्माइल के साथ एक्सप्रेस करें तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, लीगल नॉलेज में मुझे डाउट नहीं है कि आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई केस लॉ नहीं आता, उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने ऐसे ही आपसे एक केस पूछ लिया था मच्ची सिंह का, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसको सॉरी बोल के आराम से स्माइल के साथ आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आपके होम टाउन के बारे में, आपने 2 जगह पढ़ाई करी है, उन सब के बारे में, हॉबीज पर सभी पे काम करके जाइए। आपकी हॉबीज पे मैं ऐड करूंगी कि आपने बहुत सारी हॉबीज बताई, कॉमेडी वीडियोस, मोटिवेशनल मैम वीडियोस, मूवीज। आंगनवाड़ी बताया मैम, आंगनवाड़ी में पढ़ाता हूँ, मतलब ऐसे ही जब खाली रहता हूँ तो वहां पढ़ा लेता हूँ, बाकी मूवीज तो देखता ये हूँ। 4-5 हॉबीज आपने मुझे बताई, मतलब हमें बताई हैं, तो इस पे आप वर्क करिए कि आपने ये यही 5 से हॉबीज कहीं वहां पे भी बताई होगी ना। हाँ यस मैम, यही बताऊंगा मैं, तो क्योंकि इस पे खाली थोड़ा सा टाइम आप में काम यही करके करता जाइएगा। हूँ। ठीक है, जैसे मैम अगर आप कुछ हिंट कर पाए तो। जैसे आप सर ने आपसे मोटिवेशनल स्पीकर्स पूछे थे, मैंने आपसे मूवीज पूछी थी। मूवीज में आप खुद बताइए आपने क्या बताया है। मेरे को एक तो आपने वेब सीरीज बता दी, दूसरी आपने क्रिमिनल जॉली जस्टिस। एलएलबी का ही पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया, ना ही आपने कोई केस लॉज बताया, और फोर्थ तो आपको आई नहीं। मैम अभी एक याद आ पा रहा है मैम, OMG जो मूवी आई थी, ओ माय गॉड, वो भी एक लीगल। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ऐसा था कि कोई सेक्शन बेस्ड अगर कोई मूवीज है, जी मैम। उस टाइप की मूवीज, जैसे अभी मुझे याद है सेक्शन 375 है, आर्टिकल 16 है। ठीक है, इस टाइप की आर्टिकल मूवीज जो 66। हैं, जो सिक्स इस पे सेक्शन बेस्ड है या किसी लॉ पर बेस्ड है, उस पे उसके नाम ले सकते थे आप।
ठीक है, तो इस ठीक पे है। हॉबीज पे थोड़ा सा काम कर लीजिए आप।